Hi, welcome to all viewers. I am Chittaranjan Das. Today we read about the factor affecting the conductance. Factor affecting in the conductance or electrolytic conductance. Okay, in electrochemistry chapter for class 12. तो हमें पढ़ू which factor affect to electrolytic conductance. Conductance mean electrolytic conductance mean all type of conductance which we have already discussed in last class. That is, one is conductance, conductivity, specific conductance, conductivity or specific conductance, equivalent conductance, molar conductance, these are the conductance, conductivity. Conductance means the age of flow of electricity. Age of flow of electricity are called conductance. It is represented by C. C equal to 1 by R, unit ohm inverse. And conductivity means the conductance provided per unit volume. Conductance in 1 ml solution. That means that is represented by kappa. Kappa equal to C into L by A. L by A are the cell constant. L by A are the cell constant. Equivalent conductance represented by lambda m, either capital lambda or small lambda m, which is equal to K into 1000 by normality. And molar conductance, here is lambda eq. Molar conductance is the lambda m, that is K into 1000 by m. N is the normality. N mean normality and M mean molarity. This is already discussed in last class. What is the conductance, what is conductivity, what is equivalent conductance, and what is molar conductance. All are the depend upon the number of ion. Number of ion. Ion is the carrier of electricity. It is electrolyte means which conduct electricity in presence of in liquid state or in fused state or in aqueous solution due to the presence of ion. So each and every parts, each and every part mean conductance, conductivity, equivalent conductance, molar conductance depend upon the number of ion. Number of ion and the volume of solution. Volume of solution. And number of ion present in solution, that is called concentration. Concentration. Okay. So concentration, volume of solution, these are the main factor which affect to the conductance, because conductance is conductive power of all ion present in solution. Conductivity means conductive power of all ion present in 1 ml solution. Equivalent conductance means conductive power of all ion produced by 1 gram equivalent mass of electrolyte. Molar conductance means conductive power of all ion present produced by 1 mole electrolyte. एथरे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजल्व करले जति आयन आसीबो सेमानकर कंडक्टिव पावर अछि मोलार कंडक्टेंस. 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास डिजल्व करले जति आयन फॉर्मेशन हो, दैट इज कंडक्टिव पावर इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. 1 ml भितरे जति आयन रहउची त तमकर कंडक्टिव पावर होउची कंडक्टिविटी. एंड टोटल जति आयन प्रेजेंट अछि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड
conductance. That is called a conductance. Okay, so that the factor affect to conductance mean that is factor which is main factor which affect to the change of number of ion, which affect to the change of number of ion. कौन factor number of ion को change करूची, that is the factor. First is nature of electrolyte. Nature of electrolyte. First factor, that is nature of electrolyte. Nature of electrolyte. Nature of electrolyte. That is nature of electrolyte. Mean electrolyte mean the substance which conduct electricity in a aqueous solution. The electrolyte mean the substance which conduct electricity in a aqueous solution or in a fused state. But electrolyte are two type. One is strong electrolyte. Strong electrolyte. Another one is weak electrolyte. Weak electrolyte. Okay, अब तेरे दुईटा जिनस अच्छी गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन कंप्लीटली डिसोसिएट. completely dissociate or dissociation or DOD mean degree of dissociation or degree of dissociation alpha equal to 1. Okay, weak electrolyte mean partially dissociate or degree of dissociation mean alpha is less than 1. Then question arises, what is degree of dissociation, what is alpha, what is degree of dissociation, what is completely dissociation, what is dissociation. Mean electrolyte dissociate into ion are called dissociation. Suppose हमें NaCl नोचे से dissociate है कि breakup है कि कौन होची ना Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus, that is the dissociation. This process are called dissociation. An ionic compound dissociate or convert to in ionic form, are called dissociation, सेटा को हमें कौन कहूँ dissociation. So NaCl convert to Na plus and Cl minus. तो suppose we take 10 mole NaCl है आम 10 मोल NaCl नेलु से जदि 10 मोल मीन कंप्लीट डिसोसिएट मीन 10 मोल जाक डिसोसिएट है 10 मोल Na प्लस एंड 10 मोल Cl माइनस मिलेला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच गिव्स मोर आयन. मीन कंप्लीट डिसोसिएट मीन व्हाट complete dissociate mean completely dissociate mean हमें 10 मोल नेलु से complete when 10 मोल जाको dissociate करिए होची, that is called complete dissociate. And the degree of dissociation alpha equal to number of ion dissociate by total number of ion. By total number of ion you take, that is called alpha. If you take 10 mole, then alpha equal to total number of ion 10 and dissociate 10, so 10 by 10 equal to 1.
mean for strong electrolyte degree of dissociation equal to 1. For strong electrolyte degree of dissociation equal to 1. तो से माने जो माने टोटली और कंप्लीटली डिसोसिएट होचंती माने हमें सपोज x मोल होचो सिथु x मोल Na प्लस x मोल Cl माइनस असुची जेतिकी नेलु सेतिकी डिसोसिएट करियला ताकू कहूची कंप्लीट डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट बाय टोटल नंबर ऑफ आयन. हमें जेते नंबर ऑफ आयन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड जेतिकी मोल्स इलेक्ट्रोलाइट नहीं आउ से जेते मोल डिसोसिएट कले तार रेशियोटा को आम कौन कहूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जेटा आम आयोनिक इक्विलिब्रियम रे पढ़ुलु. सो इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 बट फॉर इन वीक इलेक्ट्रोलाइट पर व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आर पार्शियली डिसोसिएट which partially dissociate. Suppose we take as a HA is a electrolyte and it dissociate into H plus and A minus. H plus and A minus. Okay, mean if you take here is 10 mole or 10 molecule HA and it dissociate up to suppose it dissociate 3 mole or 3 molecule H plus ion and 3 A minus ion. Okay, means out of 10 it dissociate only 3. Out of 10 जदि 10टी molecule लैतिलु सेतरु 10टी जाको dissociate न होइकी 3टी dissociate हेची मैंने आहुरी 7 molecule undissociate अच्छी मीन्स से कौन आयन को कन्वर्ट हो पारि नहीं कहीं हो पारि नहीं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रे कोन होतला हम 10 मॉलिक्यूल नेलु बा 10 मोल मॉलिक्यूल नेलु सेतरु 10 मोल डिसोसिएट हेतला 10 मोल जाको डिसोसिएट हेतला किंतु एठी वीक इलेक्ट्रोलाइट रे 10 मोल रु 10 मोल डिसोसिएट हे पारु नाही सपोज 3 मोल होची या 4 मोल होची बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल दैट again establish a equilibrium mean this molecule again form the HA ए दिटा मिसी की कोन होची HA फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम ये डिसोसिएट होची बट अगेन ये फॉर्मेशन होची कोन HA तो सेटी उडे आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हे होची सेटी उडे आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होचु दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट से कंप्लीटली डिसोसिएट हे पाने से जते डिसोसिएट करूची पुनी ये दिटा मिसी की पुनी सेम आयन फॉर्मेशन करि दोचंती तो मैंने कंप्लीट डिसोसिएट हो पारु नाहंती तो जेहेतु कंप्लीट डिसोसिएट हो पारु नाहंती तो एटा होतु पार्शियल डिसोसिएशन हियर इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3/10 because total molecule taken at the 10 out of 10 only 3 molecule dissociate mean 0.3 mean less than 1 alpha less than 1. So if strong electrolyte taken then it give the high conductance. Jodi strong electrolyte दिया जिवो obviously यार conductance अधिक दबाव then weak electrolyte कहीं ना strong electrolyte रे number of ion अधिक रहउछु काटो weak electrolyte रु जदी एतरे बा में 10 मोल लेलु एतरे भी 10 मोल लेलु कि एथरो आयन पाउछु 10 मोल Na plus 10 मोल Cl minus बता एतरे पाउछु 10 3 मोल H plus 3 मोल A minus. So it depend upon the nature of electrolyte. Nature of electrolyte mean whether the electrolyte is a strong electrolyte or weak electrolyte or moderate electrolyte. If the strong electrolyte always have the high conductance than the weak electrolyte, because the electrolyte always depend upon the number of ion. Depend upon the number of ion. Strong electrolyte always have high conductance conductance mean all type of conductance that may be only conductance or kappa mean conductivity molar conductance or equivalent conductance
then weak electrolyte, okay. Strong electrolyte always have a high conductance than the weak electrolyte, So first is the nature of electrolyte. The conductance always depend upon the nature of electrolyte, whether it is a strong electrolyte or it is a weak electrolyte, or a weak electrolyte. Then read about the concentration. Depend upon the concentration. Next factor are the concentration. Okay. Next, concentration means depend upon the volume of solvent. Mean on the concentration, increase of concentration, the increase the number of ion, जदि concentration अधिक रोची तो number of ion obviously अधिक रोची, number of ion अधिक रहिले तो conductance भी अधिक होबो, but on a dilution, concentration mainly depend upon the dilution. That is the main factor of the electrolytic conductance. Dilution mean addition of water. Dilution mean addition of water. Water addition कले कौन होची ना, जदि हमें फर्स्ट सॉल्यूशन नेलु, suppose here is ions are present, mean conductance totally depend upon the number of ion. Conductance always depend upon the ion. Suppose here is cation, means some positive ion, some negative ion present. If the distance between the two ion decreases, then two ion are, if opposite ion attract towards each other, attracted towards each other's, when it is attracted, the conductance decreases. But on the addition of water, its concentration decreases. जदि हमें इतरे water add करूचो, इतरे जदि हमें water add कलु, यार concentration decrease करिवो. Concentration decrease कले यार volume of solution increase करिवो. First कथा हला ये distance between two ion कौन हम बढ़ी जीव, बढ़ी गले से माने एज ऑफ कंडक्टिविटी तांकर जो इजीली कंडक्टेंस पावर आउ एट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज कर जीव, देन द कंडक्टेंस इंक्रीजेस माने कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बट कंडक्टेंस increases. On a dilution, when we add the water, then conductance, especially on conductance increases. Its concentration decreases but conductance increases. First cause, due to the distance between two ion increases. Second things, some undissociated particle in case of, especially in case of weak electrolyte. In case of weak electrolyte mean are not completely dissociated. There is some undissociated particles. Suppose Ha or CH3COH dissociate into H plus and A minus, are not completely dissociate, So when the concentration, I mean dilution increases, mean add of the water,
it concentration decreases, change of concentration, then equilibrium will shift according to Lee Chatelier principle. एटी कहीं कंप्लीट डिसोसिएट हो पारा कहीं इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश होता कहीं इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश होता कि वाटर ऐड कराला कंसंट्रेशन चेंज कराला चेंज ऑफ कंसंट्रेशन शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम जिते कंसंट्रेशन चेंज होला से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन को then the more number of ion will produce when number of ion more number of ion produced then conductance also increases. That is the second reason. First, the distance between the ion or increases. Second reason, the undissociated particles start to dissociate because the equilibrium shift. In case of weak electrolyte, strong electrolyte, this region is not affected because they have already dissociate. Some already dissociate hey sari thanti. But in case of weak electrolyte, the number of dissociate or number of ion also increases. कहना हमें जटा कि फर्स्ट ईयर रो पढ़ितलु ऑस्ट्रल्स लॉ सपोज H plus A minus suppose initial concentration C here is 0 out of C the C alpha molecular dissociate means C minus C alpha at final concentration C minus C alpha here is C alpha number of H plus and C alpha number of A minus so K equal to concentration of H plus into concentration of A minus by concentration of HA means C alpha into C alpha into C into C minus C alpha means C common नहीं गले 1 minus alpha means C cancel C alpha square by 1 minus alpha K equal to C alpha square by 1 minus alpha 1 minus alpha neglected in denominator so alpha square equal to K by C mean alpha equal to K by under root of K by C okay so here is see that C is inversely or alpha degree of dissociation are inversely proportional to concentration मान जदि कंसंट्रेशन डिक्रीज करूछु डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करूछु डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सॉरी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस ओके दिस इज द ऑस्टवाल्स लॉ एटा ऑस्टवाल्स लॉ जेटा फर्स्ट ईयर रो पढितलो तो एठु भी हमें प्रूफ करि पारबु जते कंसंट्रेशन डिक्रीज करछु देन कंडक्टेंस इंक्रीजेस ओके then if concentration decrease then conductance increase if concentration decrease and decrease of concentration and decrease of concentration conductance increases conductance increases okay due to first distance between two opposite ion increases seconds on dissociate molecule undergoes dissociation that's why it's a conductance increases that is on dilution on concentration decrease on the dilution decrease of concentration कौन आछिबो ना dilution specially dilution mean addition of water it is effect on the conductance effect on
conductance. What is the effect on conductivity? Effect on conductivity. Effect on conductivity कौन हम? Then question है यदि conductance increase होची conductivity कौन हम? I have already say in case of strong electrolyte there is a little effect on the conductance, but in weak electrolyte mean dilution have the little effect, but in case of especially in case of weak electrolyte it gives the more effect. But in case of conductivity, conductivity mean कौन? Conductance of 1 ml solutions, conductance of 1 ml solution, 1 ml solution भितर जतिकी नंबर ऑफ आयन रोची तो से होची कंडक्टिविटी. तने आमे जदि डाइल्यूशन ऐड करूचे वाटर ऐड करूचे सपोज एबे एतिकी थिला देखा आमे अधिका इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूने तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते तो कंडक्टेंस इंक्रीज करता बा कंडक्टिविटी इंक्रीज करता. एटी आमे अधिक किछि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूने केवल ऐड करूचे वाटर. जदि वाटर ऐड करूचे नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करूची सत पर 1 ml सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस. अरे तमे सपोज गोटे ग्लास रे किछि सॉल्ट नैचो तार कंसंट्रेशन जति किछि नंबर ऑफ आयन जति कि अछि पर ml पर 1 स्पून ऑफ वाटर गोटे चम्मच पानी रे जति कि तुमको सॉल्टी लागुची जदि एतरे वाटर ऐड करूचो देखिबो सॉल्टी रे परिमाण आस्ते आस्ते कमी जिवो because the number of ion per ml decreases because concentration decreases. As concentration decreases number of ion per volume decreases. As number of per volume decreases the conductivity also decreases. On dilution the conductivity decreases. On dilution the conductivity decreases. जते डाइल्यूशन चलीची सेतबेले कंडक्टिविटी डिक्रीज करी चलुची. कंडक्टेंस इंक्रीजेस but conductivity decreases due to decrease of decrease of the number of ion per 1 ml solution so that the number of ion or conductivity decreases. Okay, so conductance increases, conductivity decreases, then we go to molar conductance. Okay, then we go to molar conductance. Molar conductance and equivalent conductance. Molar conductance. Molar conductance and equivalent conductance have the same effect. Dilution have the same effect. Equivalent conductance. Molar conductance and equivalent conductance. Then you put the logic को टिक्के चिंता करो बहुत ही सहज कथा. मोलार कंडक्टेंस मीन conductance of the all ion produced by 1 mole electrolyte. 1 mole electrolyte. 1 mole electrolyte नबा सेतिरे जतिकी आयन आसुची से आयन मानकर कंडक्टिव पावर होची मोलार कंडक्टेंस. Equivalent conductance mean the conductive power of all ion produced by 1 gram equivalent mass. 1 gram
इक्विवेलेंट मास 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास रो इलेक्ट्रोलाइट नवा से जति आयन आसीबो दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओके ऑन डाइल्यूशन माने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व की जति आयन दउची तो इफ इन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कथा जदि आमे चिंता करूचु इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मीन दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएट सी ऑलरेडी कम 1 मोल बोले कि जदि आमे 1 मोल नउचे सेतरे 1 मोल पॉजिटिव आयन 1 मोल नेगेटिव आयन आसी तो सेतिकी ताकर कंडक्ट तो एडिशन ऑफ वाटर पर भी सही 1 मोल आसीबो ना अधिक आसीबो बट जदि किछि स्लाइटली 0.1% ऑन डिसोसिएट था डिसोसिएट इत्यादि फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मीन डाइल्यूशन has slightly increase the equivalent conductance and molar conductance in case of strong electrolyte it has slightly effect for the molar conductance and equivalent conductance because there is no change of number of ion. If the graphically represent, it will dissociate. The dissociate increase, they will get a point that is the lambda m node. If you take the plot the graph, the under root of square concentration and the molar concentration molar conductance at concentration C at the molar conductance at infinite dilution then this is a straight line mean y equal to mx plus c you know that for a straight line there is y equal to mx plus c y means molar conductance at a concentration C equal to C mean that is lambda node m by x mean as it in slope in negative form that is minus x mean under root of C and m is the slope that is a constant b. Okay, this equation also help to determine the conductance at a infinite dilution for a strong electrolyte. For a strong electrolyte this equation b is the constant which depend upon the nature of electrolyte nature of solvent b is a constant c is concentration here is molar conductance at concentration C here is molar conductance at a infinite dilution it is specially for a strong electrolyte but in case of weak electrolyte कथा जदि आमे चिंता करूचो in case of weak electrolyte the molar conductance and equivalent conductance increases with increase dilution due to on dissociate particular molecule undergoes dissociation on dilution on
डाइल्यूशन डाइल्यूशन हेले कंसंट्रेशन चेंज हो जाए कंसंट्रेशन चेंज हेले जो वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाए देन इट गिव्स द मोर आयन एज मोर आयन देन इट्स equivalent conductance and molar conductance increases but at point will come जदि आमे सेमती एडिशन करी 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 जीवा वाटर ऐड करी करी जीवा तब तो मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज करियो बट गोटे पॉइंट आसी जीवो जे पॉइंट पर आउ डिक्रीज की इंक्रीज करिवो नाही आउ इफेक्ट करिवो नाही ए पॉइंट विल कम ऑन डाइल्यूशन ए पॉइंट विल कम on dilution a point will come where dilution has no effect on molar conductance or equivalent conductance. This point is called infinite dilution. This point is called infinite dilution. Infinite dilution. तो ये है आसिक गोटे ट्रू पॉइंट पाइला जगह तार आउ बढ़ला नहीं बट ये कौन हम ना यार आस्ते आस्ते इनक्रीज करी जीव देन ये पैरेलल हो जीव बट या पर आउ इफेक्ट हेनी पूरा जीरो तो हेनी पूरा कंप्लीट तो डिसोसिएशन हेनी ना पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हेनी दैट्स व्हाई इट इज द पैरेलल दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन सो वी कैन नॉट कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन सेतबे हम से इक्वेशन लैम्डा एम at concentration c equal to lambda m naught minus b root c एक इक्वेशन रे हम यूज कर परिमाण ता पई बाहर करबा कोलर्क्स लॉ ता पई यूज करबा कोन कोलर्क्स लॉ दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट फॉर द कोलर्क्स लॉ एंड कोलर्क्स लॉ को यूज करके हमें गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो डिटरमिन कर परिबा जे कि चैप्टर भीतर सबुठु इजीएस्ट प्रॉब्लम अछि सेतरे हला व्हिच वी रीड इन द नेक्स्ट क्लास ओके हमें नेक्स्ट क्लास को कोलर्क्स लॉ पढ़िबा तो कोलर्क्स लॉ को जीवा पूर्व ये जो कांसेप्ट जो डाइल्यूशन रा कांसेप्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज टू concept to understand the Kohl's law and calculate the problem using the Kohl's law. Most important question. Kohl's law is also a most important question. So first you read the how the factor affect to the conductance. Okay. Thank you.